Good morning, students. Today we are going to study the topic noun clause of class 10th grammar. Getting? So first we have to know what is clause. The definition is given in the book. You see what is clause. Clause कहले हमें कौन बुझुचे हला. So clause is a group of words that form a part of a sentence, part of a longer sentence. Getting? And in that the part of that the longer sentence there must be a subject and a predicate. तले कौन बुझिले छुआ माने गोटे लंबा सेंटेंस रे गोटे क्लॉज थिबो, लंबा क्लॉज रो ये गोटे अंश ही थिबो एवं सेही अंश रे निश्चित कौन थिबो मस्ट वी हैव टू रिमेंबर निश्चित भाव रे गोटे सब्जेक्ट आ गोटे कौन थिबो प्रेडिकेट थिबो. मन रहिला तले कौन बुझिले गोटे सेंटेंस गोटे लंबा सेंटेंस रे लंबा सेंटेंस रो गोटे अंश जोथिरे से निश्चित भाव रे गोटे सब्जेक्ट आ गोटे कौन थिबो प्रेडिकेट थिबो हला. हमें सेमती गोटे एग्जांपल देखिबा. एटा गोटे सेंटेंस देख. इट इज क्लियर दैट ही इज ऑनेस्ट. तले एथिरे हमें कौन पाइले इट इज क्लियर दैट ही इज ऑनेस्ट. It is clear is a sentence. He is a honest. It is also a sorry. In this sentence here the two clauses are there. Subject verb. Here also subject and also the verb is there. बुझ पारछो तले एटा ए लंबा सेंटेंस रे he is a honest is a clause or that he is a honest is a clause. This is the main clause and this is the subordinate clause. बुझ पारछो तले clause कहले हमें कोन बुझले गोटे लंबा सेंटेंस रो गोटे लॉन्ग सेंटेंस रो गोटे अंश हेथिबो एवं सेही अंश रे सब्जेक्ट थिबो एवं प्रेडिकेट थि सब्जेक्ट थिबो एवं वर्ब थिबो बा प्रेडिकेट थिबो. मन रहिला तले ये मध्य गोटे क्लॉज ये मध्य गोटे क्लॉज. पछरे पढिबा की प्रकार रो क्लॉज ए माने. मन रहिला he said is a sentence is a एटा गोटे टोटल टा हला गोटे सेंटेंस. ए सेंटेंस रे देखो his mother is ill is a clause. He said is a clause. He says is a clause. That his mother is ill is also a clause. तले हमें कौन पढ़ुतले नाउन क्लॉज विषय पढ़िया पूर्व प्रथमे हमें क्लॉज कौन पढ़िबा. तले क्लॉज कहले हमें कौन बुझिले गोटे लॉन्गर सेंटेंस रो से गोटे अंश हेथिबो ए पार्ट हेथिबो एंड दैट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. गेटिंग? एवं जदि सिंगल क्लॉज टे खाली केवल थिबो हला सिंगल क्लॉज टे केवल खाली जदि थिबो सपोज लिखाई जे हमें खाली कहि देले इट इज क्लियर देन वी से इट इज ए सिंपल सेंटेंस. हमें जानी छे हला इटा हला सिंपल सेंटेंस. लेसन 2 रे हमें पढ़ितिले टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हला से विषय मध्ये जीवा एवं मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस कैन बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और द कंपाउंड सेंटेंस हला. तार ग्राफ टी देखिबा. ए हमें पढ़ितिले रिलेशन 2 रे सेंटेंस आर ऑफ 3 टाइप्स सिंपल कंपाउंड एंड व्हाट कॉम्प्लेक्स. तले सिंपल सेंटेंस का को कोचे व्हिच हैज ए सिंगल क्लॉज एंड कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 or more independent clauses joined by the coordinator. यार दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबा हमें पढ़ितिले एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोन पढ़ितिले इट मस्ट have a one main clause and one or more subordinate clause. तले से गुडा को विषय पढ़िबा हला. गोटे एग्जांपल्स देखि नबा. Everybody in the family went to the cinema but Mohan stayed at home.
इटे की प्रकार क्लॉज ये है कंपाउंड क्लॉज केमिति देख एवरीबॉडी इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा इट इज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज ये एकुटिया रही परिबो मोहन स्टेड एट होम सी भी एकुटिया रही परिबो ए दीटा क्लॉज को कोऑर्डिनेट किए करूची बट इट इज द बट इज द कोऑर्डिनेटर हला एवं बट को मिसई कि आमे से क्लॉज टा को कोन बोली करी ये गोटे क्लॉज ये मध्य गोटे क्लॉज एंड बोथ आर द इंडिपेंडेंट क्लॉज हला एवं सही दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉज को किए कोऑर्डिनेट करूची बट आमे पढितिले सेकंड लेसन रे एंड और बट और एल्स हला और एल्स हाउएवर नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और as well as यही सब कोऑर्डिनेटर माध्यम रे आमे दीटा क्लॉज को कोन करूचे मिसौचे दीटा देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज हला एवं एथरिया को आमे कहले इंडिपेंडेंट क्लॉज ये भी मध्य इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटर लगेला पर कोन हे गला दिस वन इज द मेन क्लॉज एंड दिस वन इज द कोऑर्डिनेटिंग मेन क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग मन हला या को मध्य हमें उल्टे परिबा मोहन स्टेड एट होम बट एवरीबॉडी else in the family went to the cinema या द्वारा कौन होबो this became the independent clause this became the main clause and this became the coordinating main clause दीटा जाको independent हला एबे देखिबा complex sentence केमिति होछि इडी देखो मोहन stayed at home ये इंडिपेंडेंट मीनिंग बहन कला मोहन घरे थिला जेते बेले समस्ते सिनेमा रे थिले सिनेमा देखुथिले बुझ परछ ए जो जेते बेले समस्ते सिनेमा देखुथिले बोली कहले ता वाक्य रो किछि इंडिपेंडेंट मीनिंग रहिला नै हला बुझ परछ ना नहीं तेणु करी या को आमे कहिले सबऑर्डिनेट क्लॉज ये तार निजर अर्थ बहन करिबा पई कहा ऊपर डिपेंड करछि इट डिपेंड्स अपॉन दिस मेन क्लॉज मन रहिला या को आमे कहिले मेन क्लॉज एंड दिस वन इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज अंडरस्टूड तले या को आमे कहूचे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोली तमे आमे नाउन क्लॉज जो पढिबा एथिरे सबऑर्डिनेट क्लॉज कथा पढिबा ए सबऑर्डिनेट क्लॉज माने डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स हला this one is this तले से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विषय ही पढिबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे जो गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए से सबऑर्डिनेट क्लॉज ता कोन ही परिबो नाउन क्लॉज ही परिबो रिलेटिव क्लॉज बा एडजेक्टिव क्लॉज ही परिबो नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब क्लॉज मध्य ही परिबो गेटिंग तले देखिबा कहा को नाउन क्लॉज कहिबा कहा को एडवर्ब क्लॉज कहिबा से सब देखिबा पूर्वरु आमे जहां वर्तमान सुधा पढिले ता विषय टिके एक्सरसाइज कले हमें बेटर हो प्रैक्टिस करि परिबा रियली केते बुझिले हला क्वेश्चंस देखो लिखा है मेंशन वेदर दिस द सेंटेंसेस और दिस द एक्सप्रेशंस आर फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस तले कोन बोली कहिबा देखो फर्स्ट वन व्हाट इट इज रिटन वेयर हैव यू बीन इटा गोटे सिंपल सेंटेंस आमे जानि छे एथिरे गोटिए मात्र सब्जेक्ट अछि एवं गोटिए वर्ब गोटिए मेन वर्ब गोटिए ना नहीं वेयर हैव यू बीन एथिरे आ किछि नाही डबल नाही तेनु या को आमे सेंटेंस कहि परिबा हला ए सेंटेंस रा होछि गोटिए मात्र क्लॉज वन क्लॉज इज देयर हला हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल हम्प्टी डम्प्टी वॉल ऊपर बसी थिले व्हिच वन इज द वर्ब sat is the verb and humpty dumpty is the subject tale gotiye subject gotiye verb rahila then what it will be it is also a simple sentence okay like a diamond in the sky now tell me which one is the subject which a verb is there any subject and verb in the sentence is there any subject and verb in the sentence like a diamond in the sky no it's just a part of a sentence but has no subject no verb so it is called the phrase what saying phrase tale what is called phrase phrase कहले हमें कोन बुझुचे it is a part of a sentence and it doesn't have any verb जदि verb नथिबो ताले ताको हमें phrase बोली कहबा
हला who pulled her out interrogative sentence एटा गुटे क्वेश्चन सेंटेंस कि नुहे who is the subject here pulled is the verb तले कौन हला सिंपल सेंटेंस तले खाली हमें सेंटेंस लिखिबा and Jill came tumbling after and लगी छि देखो and और but एगुडा को लागि थली कोन हि थाई आ गुटे मेन क्लॉज को ये कोऑर्डिनेट करे तेनु and Jill came tumbling after तले याको हम कोन कोली कहिबा कोऑर्डिनेटिंग मेन क्लॉज ला तले हमर तो कोऑर्डिनेटिंग मेन क्लॉज को थाले खाइ नै लिखाइ छि खाली क्लॉज तले हमें कोन लिखिबा इट इज ए क्लॉज बुझला under the queen's chair is there any subject is there any verb किछि नै सब्जेक्ट verb थिले क्लॉज हि थांदा verb भी नाही ला ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस किंतु सब्जेक्ट नाही कि verb भी नाही हला तेनु ये हिजबो फ्रेज कोन हिजबो फ्रेज ऑल द किंग्स हॉर्सेस या को सब्जेक्ट करि परिबा ऑल द किंग्स हॉर्सेस हला ऑल द किंग्स हॉर्सेस आर लिखि कि आमी किछि बोले सेंटेंस लिखि परिबा किंतु सेमति किछि नाही खाली सब्जेक्ट अछि मींस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हला तेनु ये मध्य एति वर्ब जेहेतु नाही या को मध्य फ्रेज कहिबा ऑफ द हिल हियर आल्सो नो वर्ब देयर ये भी हला फ्रेज हला सेंटेंस नुहे वर्ब नाही की क्लॉज मध्य हे परिबो नाही हला ए नाइस फेयरी स्टोरी एथरे मध्य से आछि सब्जेक्ट नाही वर्ब नाही ये भी सही फ्रेज हला जैक फेल डाउन जैक तळे पड़ी गला जैक तळे पड़ी गला इट्स ए सेंटेंस कहीं की सेंटेंस हला जैक इज सब्जेक्ट फेल डाउन इज द फेल इज द वर्ब बुझ परछो सब्जेक्ट वर्ब रहिले गुटे कंप्लीट सेंटेंस हला ए स्टिच इन टाइम एतरे वर्ब किछि नाही हला एतरे वर्ब किछि नाही इट्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस तेनु ताको हमें फ्रेज बोली कहबा नेक्स्ट वन द क्लॉक स्ट्रोक 1 वर्तमान गोटाए बाजिछि अर्थात घंटा गोटिए बजाइला अर्थ आखिर गोडिया कहले अर्थात गोटिए बाजिछि वर्तमान किए से स्ट्राइक कला क्लॉक स्ट्रोक सॉरी क्लॉक रो वर्ब के हला स्ट्रोक स्ट्राइक रो पास्ट फॉर्म स्ट्रोक हला तली हला सब्जेक्ट ये हला वर्ब सो दिस इज ए सेंटेंस pussy in the well no verb is there it is part of a sentence so it is phrase after sealing the letter here no verb is there letter sealing करि सारला परे जदि हमें ताको कंप्लीट करथांते सेंटेंस टा after sealing the letter he posted it इमति लिखथांते ताले कोन हितांता अब बुझि परछ after sealing the letter एटा पार्ट ऑफ a sentence here no verb is there so it becomes also phrase to fetch a pail of water हला he went down to fetch a pail of water he went down he is the subject went is the verb हला सेगुडा किछि लेखाइ सब्जेक्ट वर्ब कटि गला खाली लेखाइ to fetch a pail of water it part of a sentence no verb there so it is called phrase getting ताले समस्त बुझि परलो फ्रेज कोन क्लॉज कोन सेंटेंस कोन क्लॉज कहले हमें कोन बुझुचे क्लॉज कहले एंड और बट आइदर और एगुडा को सब लागि कि थिले ताको हमें क्लॉज बोली कहिबा कंपाउंड सेंटेंस रो आउ जदी दैट व्हेन वेयर व्हिच एगुडा को लागि कि से सेंटेंस टी हेतिबो से क्लॉज टी हेतिबो ताले ताको हमें कहिबा कोन बोली सबऑर्डिनेट क्लॉज से विषय रे पढी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो So what the exercise here? Draw double lines under the main clause and single line under the subordinate clause. एटा बहुत सहज अछि एटा न बुझिले हमें आकु जाई परिबानी भलो से देखिया को पड़िबो हला ओके यू सी फर्स्ट सेंटेंस सेइंग I cannot express how sorry I am. How I cannot express this is the main clause. You should make double line. And how sorry I am it is this subordinate clause WH question begin with this the clause sorry I am I is the subject am is the verb getting
Then how sorry I am, it is the subordinate clause. In the under the subordinate clause you do underline, single underline. I cannot express a independently ता अर्थ प्रकाश करुछि किंतु केते मु सॉरी यार इंडिपेंडेंट अर्थ किछि प्रकाश करू नाही, तेणु याको आमे कहिले सबऑर्डिनेट क्लॉज हला। एटी देखो and लागिछि, here and is there, so and means what, and थिले कोन and or but एगुडा को थिले कोन हुए compound sentence. So this is one independent clause, this one is another independent clause, this one you say main clause and this you say coordinating main clause. Understood? As it is coordinated to this by and. हला WH क्वेश्चन वर्ड अछि देखो, WH क्वेश्चन वर्ड रु जे आरंभ हला किमा दैट रु आरंभ हला ताकू हमें कोन बोली कहिबा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोली कहिबा हला। हाउ रु आरंभ होईछि, दैट रु आरंभ होईछि, एठी मध्ये दैट रु आरंभ होईछि, ये मध्ये हाउ रु आरंभ होईछि, व्हेन रु आरंभ होईछि। WH क्वेश्चन वर्ड रु आरंभ होइतिले किमा दैट रु आरंभ होइतिले ताकू हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बोली कहिबा। एगुडा को सबु हेले सबऑर्डिनेट क्लॉज, आइडिया खटा हला। किंतु and और but either or neither नर एगुडा को लागितिले हिजबो कोऑर्डिनेटिंग मेन क्लॉज। तो हमर या संबंध रे किछ पढिबार नै, हमर पढिबार अछि एही सबऑर्डिनेट क्लॉज विषय, आइडिया पाइलो। तले आरंभ रे जो गुडा को लिखा हिजे देखो, all is not gold, all that glitters, that glitters that is the एठी हम कोन बुझिबा, that is subject, glitters is the verb, all that glitters is not gold। तले एथि ये हे गला सबऑर्डिनेट क्लॉज and all is not gold is the main clause। सेही भली एठी से गुडा को सब सहज, Jack fell down is the main clause, all depends on is the main clause, it is feared main clause, it is clear main clause, I asked the boy main clause, these are the main clauses। Understood? एवं जोटा WH क्वेश्चन वर्ड रु किबा दैट रु जोटा आरंभ हला ताकू हमें कोन बोली कहिबा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आइडिया पाइलो? नाउ वी हैव टू गो, व्हाट इज द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज काहा को हमें कहिबा, तले सेही जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें तीन भाग करथिले। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार बोली मु कहितली, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे मेन क्लॉज सहित वन और टू सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए, से सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें कहि परिबा नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज किंबा एडवर्ब क्लॉज। याकू नै करी हमर दुईटा चैप्टर अछि, गोटे चैप्टर रा नाउन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज, आ गोटे क्लॉज अछि एडवर्ब क्लॉज, आ गोटे टॉपिक अछि एडवर्ब क्लॉज हला। तो फर्स्ट हमें आज पढिबा व्हाट इज नाउन क्लॉज, एटा गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज जानिबा हला। तले केते बेले ताकू हमें सब नाउन क्लॉज बोली कहिबा, केते बेले कहिबा, ताले ये गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज जे फंक्शंस एज ए नाउन इन दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें पढ़ी देले सेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए, कंपाउंड सेंटेंस रे कोऑर्डिनेट क्लॉज थाए, मेन क्लॉज कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज। ताले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे जेते बेले गोटे क्लॉज बा सबऑर्डिनेट क्लॉज टा सब्जेक्ट ऑफ टू ए वर्ब भाव रे काम करी। गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट क्लॉज टा सबऑर्डिनेट क्लॉज टी सब्जेक्ट टू ए वर्ब भाव रे काम करिवो, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब भाव रे काम करिवो, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन भाव रे काम करिवो, किंबा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन काम करिवो, किंबा इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन काम करिवो हला। देखिबा गोटे पर गोटे एका बेले कहले गुडा को बुझियो बनी। ओके, सो फर्स्ट वी सी गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वर्क्स एज ए सब्जेक्ट टू ए वर्ब। केमिति होउची देखिबा, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। तले इन दिस द सेंटेंस व्हिच वन इज द वर्ब, वर्ब इज व्हिच वन, was is the verb। was पूर्वरु जहा बसे ताकू हमें कोन बोली, is आमार was पूर्वरु जहा बसे that is subject or not। हमें कहितांते he was true, तले he is the subject। what he said was true, what he said is what he said also the subject। understood?
ताले वर्ब पूर्वरु जनरली बसे आम एतिक आइडिया रखिबा वर्ब पूर्वरु जेतिक जेतेबेले बसुची ताको आम सब्जेक्ट बोली कहूचे सो हियर दिस द क्लॉज इट सबऑर्डिनेट क्लॉज देखो WH रु आरंभ होईची दैट रु आरंभ होईची व्हाई रु आरंभ होईची वेदर रु आरंभ होईची WH व्हाट रु आरंभ होईची ला याको आम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोली आइडिया रखिचे हैं ताले दिस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जस्ट प्लेस्ड बिफोर द वर्ब यूसी वर्ब पूर्वरु बसिची ताले these are functions as what these are used as what subject to a verb idea pailo ताले what he said is the noun clause where he is going is the noun clause that he will return within an hour ये मध्ये गोटे noun clause verb पूर्वरु बसिची हला why refuse the job ये मध्ये गोटे noun clause whether he did so is also a noun clause ये माने समस्त सब्जेक्ट पूर्वरु बसछन गेट ए वर्ब पूर्वरु बसछन अंडरस्टूड नेक्स्ट वन यू सी जे गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे जदि वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव रे काम करे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव रे काम करे ताले ताको हमें मध्य नाउन क्लॉज बोली कहबो हला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज जदि वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव रे काम करे इफ इट यूज्ड एज इफ इट इज फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब देन वी से इट इज द नाउन क्लॉज अंडरस्टूड you see this is the complex sentence I asked the girl how old she was so how old she was is a complex sentence understood sorry how old she was is a subordinate clause in this the complex sentence एही subordinate sentence रे ये कोन भाबरे काम करछि देखिबा I asked मु पचारिली काहा को पचारिली गर्ल को कोन पचारिली how old she was कोन आउ काहा को आंसर देले ताको हमें ऑब्जेक्ट बोली कहि थाउ नो ताले देखो ये कोन रो आंसर दला तेणु कोन रो आंसर देबा जोगु या को हमें कोन बोली कहले ऑब्जेक्ट आई आस्क्ड मु पचारिली कोन पचारिली ना हाउ ओल्ड सी वाज हला तेणु इट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट तेणु ऑब्जेक्ट भाव रे काम कले ताको हमें नाउन क्लॉज बोली कहबो गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज जदि वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव रे काम करे कोन काहा को आंसर दिए ताहले ताको हमें नाउन क्लॉज बोली कहबो आइडिया पाइलो से भली एटा भी देखो गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे सबऑर्डिनेट क्लॉज के हला where you found this bag of gold तले टेल मी मते कुह काहा को मते मी इज आल्सो ऑब्जेक्ट कोन कुह ना where you found this bag of gold तेणु कोन रो आंसर ये देउथिबा जगु याकु मध्ये हम कोन बोली कहबा ना नाउन क्लॉज बोली कहबा अंडरस्टूड नेक्स्ट सेंटेंस यू सी आई शैल बी ग्लैड टू नो व्हेन ही विल पे इट आई शैल बी ग्लैड मु खुशी हेबी जानी की कोन जानी की कोन रो आंसर के दोची व्हेन ही विल पे इट so this is also the object clause sorry this is also functions as the object of the verb but which one is the verb b is the verb तले b रो कोन भाव रे से काम कला ऑब्जेक्ट भाव रे काम कला understood as this the subordinate clause function as the object of this verb then we say it is the noun clause in the next complex sentence you see no one knows who he is के ही जानंती कौन जानती नहीं कौन रो आंसर किए दोची दिस वन सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द व्हाट दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड एज द नाउन क्लॉज आइडिया पाइलो समोट में कौन बुझी नेले जे गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोली केमिति जानु छ तेबे ए जो कोन रिलेटिव प्रोनाउन ला कौन सब बसची हाउ वेयर व्हेन दैट हु ए जो प्रोनाउन गुडा को बसिची दीटा सेंटेंस को जॉइन करिवा पई हला थिले ताको हमें सबऑर्डिनेट सेंटेंस बोली कहूचे बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टोटल टा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे यही सबऑर्डिनेट क्लॉज गुडा को कोन भाव रे यूज हिचंती ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब कोन रो आंसर दोचंती आइडिया पाइलो तेणु तांको हमें नाउन क्लॉज बोली कहबो हला
देन यू सी सही सबऑर्डिनेट क्लॉज गुड़ाक जदि प्रीपोजिशन परे बसंती एवं गोटे नाउन भाबरे बा नाउन फ्रेज भाबरे काम करंती हला ताले ताकू आमे कोन कहबा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हला जदि नाउन क्लॉज टा ए जो येलो कलर्ड है सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज गुड़ाक समस्ते ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन भाबरे काम करछन प्रीपोजिशन कोठी अछि देखो समस्ते हला कोठी प्रीपोजिशन अछि this one is the preposition to open in ये सेंटेंस टा ଟିକେ भूल अछि तापरे laughed at हला हियर यू सी तले एई जो प्रीपोजिशंस हमें देखु छे प्रीपोजिशन परे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज टी रहिला तार बिगिनिंग है व्हाट हु व्हाट अछि सबऑर्डिनेट क्लॉज आईडिया जानि परछ तले सबऑर्डिनेट क्लॉज पूर्वरु जदि ए प्रीपोजिशन थाए ताले आमे कोन कहिबा ना दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज आर कॉल्ड द नाउन क्लॉज कोन बोली कहिबा नाउन क्लॉज पे केयरफुल अटेंशन टू पर जदि क्लॉज टी सबऑर्डिनेट क्लॉज टी बसुची ताले ताको आमे कहिबा इट इज ए नाउन क्लॉज आईडिया पाइलो नेक्स्ट वन द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन ताले which verbs are generally considered as the incomplete prediction is be verb जोडा को आमे कहू जे is am are appear seem get हला look ए verb गुडा को आमे कहि थाउ कोन बोली incomplete prediction ताले my belief is कहले वाक्यटी कंप्लीट हैला नाही जदि I work वाक्यटी कंप्लीट होउची I read वाक्यटी कंप्लीट होउची read टा कंप्लीट करूची सेंस टा को वाक्य किंतु इज टा वाक्य रे कंप्लीट सेंस को कंप्लीट करि पारु नाही तले इज वर्ब अपियर वर्ब सीम वर्ब एई वर्ब माने जनरली वाक्य को कंप्लीट करि पारंती नै मीनिंग हला ये माने आउ गोटिए कहा सहित वर्ड सहित रिलेट करांती लिंक करांती सब्जेक्ट को कोन करिबा पई वाक्य रो मीनिंग को कंप्लीट करिबा पई मन रहिला तले माय बिलीफ मोर से बिलीफ टा कोन that he is not guilty ए बिलीफ टा जहा विश्वास टा कोन जे विश्वास टा ही कोन सेटा कथा कहूची ता गुण को बुझुनी विश्वास टा कोन विश्वास टा हला जे that he is not guilty बुझि परछ तले this the verb it is linking the subject with this the expressions to make a complete sense so it is called the complement वाक्यर अर्थ को पूर्ण भाव रे बुझा पड़िबा पई जहा व्यवहार करा जाय जे सब्जेक्ट सहित लिंक रहे हला एई वर्ब माध्यम रे ताको आमे कहूचे कॉम्प्लीमेंट जदि एते कथा बुझी पारु नांती तले सिंपली बुझिनबा जे जो वाक्य रे खाली इज बसई दबा verb टी बसे दबा राम इज गीता इज दिस इज ताले इट इज ए इनकम्प्लीट सेंटेंस ए इज परे जहा बसिबो वाक्य रो मीनिंग को कंप्लीट करिया पई सेटा को हमें कोन कहि परिबा कॉम्प्लीमेंट बोली कहबा कोन बोली कहबा कॉम्प्लीमेंट बुझि परछ तेनु ए माने समस्त हेले ए क्लॉज गुडा को समस्त हेले कोन कॉम्प्लीमेंट काहे कि ना गुडा को सबऑर्डिनेट क्लॉज देखो दैट ही इज गिल्टी वेयर ही लिव्स दैट एथिरे सब सब्जेक्ट वर्ब अछि एवं वाक्यर आरंभ रे सब अछि डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड अछि दैट अछि थिले एमाने को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहंती एही सबऑर्डिनेट क्लॉज गुडा को जेहेतु इज वर्ब परे बसी छंती हला वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन पूर्वरु बसी छंती सो दे आर कॉल्ड द व्हाट कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब रो कॉम्प्लीमेंट बोली बुझु जाय मन रहिला आईडिया पाइलो समझते this is the thing so जदि ए कॉम्प्लीमेंट भाव रे वाक्य रे आरंभ यूज होंती as they are used as the complement in this the complex sentence so they are also called a noun clause कोन बोली ताको हमें कहिबा noun clause आईडिया पाइलो next one is in opposition to a noun or pronoun sentence देखो the news that he intended to come
gave us much pleasure. That means the news is the subject, gave is the verb. The news gave us much pleasure. The news gave us much pleasure. এটা হলা গোটে সেন্টেন্স, এটা হলা সরি এটা হলা গোটে ক্লজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স রে ये हला गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज. दिस वन इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट ही इंटेंडेड टू कम. पहले दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज यूज्ड एज व्हाट? द न्यूज गेव अस मच प्लेजर. पहले से न्यूज टा कोन? न्यूज टा कोन? न्यूज रो किसी गुण को बुझुना थी. न्यूज टा कोन? होप टा कोन? से रिपोर्ट टा कोन? फैक्ट टा कोन? जिमती आमे गोटे सेंटेंस लिखुचे. My friend Ram is very faithful. My friend Ram is very faithful. तले इतरे friend, my friend is very faithful हमें कोई पर थांते? No problem. तले ये जो friend जिए, friend के रामो, रामो की my friend. आइडिया पाइलो? This is called in opposition to a noun or pronoun. Friend जी रामो सी, रामो जी फ्रेंड सी. बुझ पारलो दीटा जाक समान जिनिस ताकू आमे कहि थाउ in opposition to a noun. Friend न्यूज हला नाउन. तले न्यूज टा कोन? that he intended to. बुझ परछो? ताले गोटे नाउन रो in opposition भाबरे जदी काम करू थाए, नाउन को अपोजिट जदी करू थाए गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ताले ताकू मध्य आमे कोन बोली कहिबा? नाउन क्लॉज. कोन बोली कहिबा? नाउन क्लॉज. आइडिया पाइलो? एग्जांपल टी को भलो से बुझो. माय फ्रेंड राम इज वेरी फेथफुल. ताले माय फ्रेंड इज वेरी फेथफुल आमे कहि परिबा. फ्रेंड जी राम से, राम जी फ्रेंड मध्य से. रिपोर्ट जी दैट ही हैड गॉन सी, दैट ही हैड गॉन जी रिपोर्ट मध्य सी. ताले से रिपोर्ट टा कोन आउ टिके एक्स्ट्रा बुझिबा पई आमे ताको व्यवहार करछ. द रिपोर्ट दैट ही हैड गॉन इज अननोन टू मी. आइडिया पाइलो? सो these are called what? In opposition to noun or pronoun. हला एटी तो सब नाउन गुडा को अछि हला. आ एटी देखिबा एटा इन अपोजिशन टू प्रोनाउन अछि. इट वाज अनफॉर्चुनेट. तले एटी कोन हिच? इट वाज अनफॉर्चुनेट. तले एटा कहारो? एटा कहारो इन अपोजिशन टू हला. एहा थिला अनफॉर्चुनेट. कोटा अनफॉर्चुनेट टा कोन? दैट ही वाज एब्सेंट. हला ई अनफॉर्चुनेट टा हला कोन? एटा गुटे कॉम्प्लीमेंट टा. इट वाज अनफॉर्चुनेट. इज आमार वाज परे जहा बसे ताकू हमें कॉम्प्लीमेंट कहि थाउ, ताकू एडजेक्टिव बोली मध्य कहि थाउ. मन रहिला? तले एटा हला गोटे एडजेक्टिव. एटा एडजेक्टिव अछि. तले दैट ही वाज एब्सेंट टा किए? वाक्य रे भलो से बुझो. एठी दैट ही वाज अनफॉर्चुनेट इज इट. That he was absent was unfortunate or it was unfortunate. तले it जे that he was absent मध्य सी. that he was absent जे it मध्य सी. तले एटा कोन भाबरे व्यवहार हेछि? in opposition to a noun or pronoun. तले it is what here? noun नो ये हला pronoun. बुझ परछो? तेनु ए मान को हमें कोन बोली कहिबा? noun plus. आइडिया पाइलो? तले हमें कौन पढ़ी एबे आउथरे टिके रिकॉल करनबा. कौन पढ़ी नाउन क्लॉज विषय रे? तले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज टी हला फंक्शंस करथबा एज ए नाउन हला इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लाइक सब्जेक्ट टू ए वर्ब. वर्ब रो सब्जेक्ट भाबरे, वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाबरे हला आउ कोन भाबरे? प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट भाबरे. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन आउ इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन भाबरे काम करूथिले से मानको हमें नाउन क्लॉज बोली कहि
हला एबे जिबा आमे एक्सरसाइज एबे देखिबा एक्सरसाइज हला एक्सरसाइज रे देखो इट इज नॉट क्लियर हु हैज डन इट तले देखो इट इज नॉट क्लियर हु हैज डन इट इज द डमी सब्जेक्ट गोटे वाक्य रे इट कहले आमे कोन बुझुचे हु हैज डन इट इज नॉट क्लियर इट कहले आमे काहा को बुझुचे हु हैज डन इट इज नॉट क्लियर क्लियर इज द कॉम्प्लीमेंट हु हैज डन इज नॉट कॉम्प्लीमेंट हियर हला तले हु हैज डन इट कहले काहा को बुझुचे इट टा को आमे डमी सब्जेक्ट बोली कहितो मन रहिला तले as it is work as the subject of the what it is subject to the verb who has done it is not clear तेणु या को हमें कोन बोली कहबा noun clause हला next one that he is honest is known to all here also that he is this one is the noun clause it is just used as the subject of the verb is understood then next question number 3 Mrs. Vethi said what said I am glad to hear it answers what as it answers what it functions as the object this is the subordinate clause and this functions as what it is object what ro answer se dela से कहिले कौन कहिले ना आई एम ग्लैड टू हियर इट यू नो हाउ हार्ड सी वर्क्स तुम्हें जानो कौन जानो कौन रो आंसर देला so this is also the object the film depends on how it ends is also the subordinate clause and it is one the noun clause why it functions as the object to preposition on after on it is here there how it ends my decision is that he must help you my decision is that he must help you this is the noun clause it functions as what my decision is after is there as is the verb of what incomplete prediction is pare basichi tenu this used as what complement what is in our fate cannot be avoided so cannot be avoided these are the verb in passive it is there cannot be avoided तले verb पूर्वरु देखा अछि what is in our fate तले ये कोन भाबरे यूज हला सॉरी एटा मु अंडरलाइन कर देली एटा verb टा तले noun clause टा हला this one what is in our fate ये कौन भाबरे काम कला सब्जेक्ट अंडरस्टूड द मैटर इज मैटर टा अटे इज परे गोटे क्लॉज बसची देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज तले इज परे जेहेतु बसला इट इज द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन तेनु या को हम कोन बोली कहबा कॉम्प्लीमेंट ओके शांति डिड नॉट नो दैट हर अंकल हैड कम ला शांति जानी नथिला कौन जानी नथिला जे दैट हर अंकल हैड कम so it functions as object it answers what of the verb so it functions as object to the verb so it is called the object to the verb next one can you tell me mate kahibo ki what who wrote the ramayana is the subordinate clause and this also functions as object why it answers what to the verb can you tell me मते कहबो कि मी इज आल्सो द ऑब्जेक्ट काहा को आंसर देले ताको ऑब्जेक्ट कोन ये कोन रो आंसर देला दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्ट नो वन कैन से केही कोई परिबे कोन कोई परिबेनी कोन रो आंसर के दोची दिस द सबऑर्डिनेट क्लास तेनु ये मते आइ गला ऑब्जेक्ट टू वर्ब मिस्टर गुप्ता promised कले मिस्टर गुप्ता प्रॉमिस कले कौन प्रॉमिस कले दैट ही वुड पुट सम फ्लावर्स ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव
ताले दिस आल्सो वर्क्स एज व्हाट ऑब्जेक्ट कोन रो आंसर दला से प्रॉमिस कले कोन प्रॉमिस कले तेणु ये वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव रे काम कला अंडरस्टूड नेक्स्ट एक्टिविटी complete the following sentences using the noun clause से noun clause टा ऑब्जेक्ट भाव रे काम करथै पारे कॉम्प्लीमेंट भाव रे इन अपोजिशन टू नाउन हला और प्रोनाउन हला देखियो सो कैन यू टेल मते कोइ परिबो की कोन कोइ परिबो की तुमे को कैन यू टेल मी जे कोन से गोटे सेंटेंस हम भाई भी कोइ परिबो मते कोइ परिबो की कैन यू टेल मी हु विल प्ले टुडे कि आज खेलिबो तले कोन भाबरे काम कला दिस इज कैन यू टेल मी कोन कहि परिबो कि हु विल प्ले टुडे दिस इज द नाउन क्लॉज होला ही एडमिटेड दैट से एडमिट कला कोन एडमिट कला दैट लोग कोन करबो दैट ही हैज टेकन माय बुक हिज लुक्स प्रूव स्टार लुक्स ताहानी प्रूव करूची कोन प्रूव करूची कौन प्रूव करूची तार चाहनी प्रूव करूची जे he has not taken her meal she has not taken her meal or she is in hunger like this we all thought that हमें समस्त चिंता कलु जे कौन we all thought that we would cancel our picnic हमें समस्त चिंता कलु जे we will not play with them like this he wanted to know से जानिबा को चाहिला how much do I earn मु केते रोजगार करे से जानिबा को चाहिला he wanted to know how much time I play how much time I study at home I have no objection to मोर कोनोसी objection नहीं I have no objection to two preposition पर गुटे noun clause बसैबा तले कोन I have no objection to how much you cheat others ए परिबो I have no objection to मोर कोनोसी objection नहीं तमे केते बदमाशी करि पार तमे जेते बदमाशी करो सेतिरे मोर ऑब्जेक्शन नाही I have no objection to कोन हबो how much you get naughty हला his plan is that तार प्लान हला कोन जैसे आज स्कूल रु पढै जिवो तले his plan is that he will leave school today Copernicus proved that Copernicus कौन प्रूव करथिले Copernicus proved that कौन प्रूव करथिले that the earth moves around the sun the rumor in opposition to noun the rumor से rumor टा कौन the rumor that I have taken his pen is true rumor टा हला मु ता पेन टा नै जाई छी एटा सत्य the rumor that the chief minister is coming to our village is true हला तले एई बडी भाबरे आमे एक्सरसाइज को मध्ये प्रैक्टिस कले तले मोटा मोटी आमे आज बुझी नेले जे व्हाट इज द नाउन क्लॉज हला तले नाउन क्लॉज कहिले आमे कोन बुझिले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए वन मेन क्लॉज सहित गुटे सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए से सबऑर्डिनेट क्लॉज गुटे नाउन क्लॉज हे परिबो रिलेटिव क्लॉज हे परिबो बा एडवर्ब क्लॉज हे परिबो किंतु नाउन क्लॉज केते बेले हेबो बोली आमे बुझी नेले जेते बेले से नाउन क्लॉज टी
ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟି कोन भाबरे काम करथुबा सब्जेक्ट टू ए वर्ब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन एंड इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन हला वीडियो टी को भलो से देखिले बारंबार देखिले निश्चित भाबरे बुझि परिबे हला थैंक यू।